Hello friends, good morning. In the previous lecture we solved some numerical problems. Today we will start the graphical representation of motion. Okay? In this video, we will discuss the graphical representation of motion. And first of all, we study about the distance time graph. First, we will discuss the distance time graph. Distance time graph. Okay? The distance time graph shows the variation of distance covered by an object with time. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये क्या शो करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये शो करता है कि टाइम के साथ डिस्टेंस का वेरिएशन कैसे हो रहा है. क्लियर? अब फॉर ड्राविंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल we take two axes. First axis x and second axis y. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए क्या करते हैं? हम टू एक्सिस लेते हैं. फर्स्ट एक्सिस को हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल को हम वाई एक्सिस क्या करते हैं? टेक करते हैं. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम को हम एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम टी को हम आप सेकेंड में लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम. और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्टेंस एस जनरली मीटर किलोमीटर जो रहता है टेबल स्केल रहता है, मान सपोज करते हैं मीटर में लेते हैं. फिर डिस्टेंस को हमने क्या किया? वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को किस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस पे लेते हैं. टाइम में दिया इन आवर, सेकेंड, मिनट एंड डिस्टेंस विल मे बी इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम वी टेक अ स्टैंडर्ड फॉर्म time in second and distance in meter. Clear? Time is written by t and distance is written here s. Okay. The graphs of distance time will be of different shapes according to condition. जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसके वेरियस शेप के ऑप्शन होते हैं. इसका शेप डिपेंड करता है हम किस कंडीशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं. ओके? तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. फर्स्ट कंडीशन ये कंफर्म होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या करता है? ये डिस्टेंस की वेरिएशन को विद द टाइम शो करता है. और इसके लिए क्या लेते हैं? हम एक्स एक्सिस के अलावा टाइम को मेजर करते हैं टेबल स्केल पर और वाई एक्सिस के अलावा हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को. क्लियर? एक्स टेबल स्केल. अगर यहां लेट कर इस तरह हमारा क्या है? एक स्केल है तो 1 यूनिट डिस्टेंस क्या शो कर रही है? 1 सेकंड शो कर रही है. 1 2 3 4 5 एंड 6. इधर पूरा क्या रहा हमारा कि 1 यूनिट जो लेंथ है ये 5 मीटर शो कर रही है. 5 10 15 20 25 30 35 and so on. Here according to our given problems. Now we take the first condition when the object is at rest.
फर्स्ट कंडीशन, when the object is at rest. ओके, हमारी कंडीशन क्या है? हम ये लेते हैं, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ उस कंडीशन में ड्रॉ करने जा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में। मींस अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। मींस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। ओके, नाउ वी सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल we take two axes x and y. Here scale 1 unit length and x axis equal to 1 second. One unit length at y axis equal to 5 मीटर। फिर हमने किस स्केल लिया कि इस पर जो 1 यूनिट लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी 1 सेकेंड, और जो y एक्सिस पे 1 यूनिट लेंथ होगी क्या होगी 5 मीटर के इक्वल होगी। हियर वी डिवाइड 1 2 3 4 5 6 and 4. Here time किसने बोला सेकेंड। फिर डिस्टेंस along y axis, distance along y axis, okay, s in meter. Here 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, 25 meter, 30 meter and so on. Clear? An observer observes that an object is present 20 meter away from the origin, means here, and this object is at rest. This object is at rest means it is not in motion. Clear? The observer observes after 1 second and he found that the position of the object is at 20 meter, means this location may be here. After next 1 second he observed that the object has 20 meter from origin. This will be somewhere, if we represent here, this is 120, this is 220. After next 1 second he again found the object at this position. This coordinate will be here 320, and after next second he again found that object is present at here. The coordinate of this point will be 420. When we join all these points, then we get a straight line parallel to time axis. When we join all these points after observation, then we get a straight line parallel to x-axis. Distance time graph. Okay, ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस. It concluded that when the object is at rest, then the distance time graph
will be a straight line parallel to the x-axis. Clear? Or if distance time graph is parallel to the time axis, means x-axis, then it concludes that the object is in rest position. Clear? कि अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और उसके लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ये एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी. ओके, नाउ वी टेक द अनदर कंडीशन. नाउ वी सी द अनदर कंडीशन. कंक्लूजन क्लियर? व्हेन वी ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट in rest position, then it will be a straight line parallel to x-axis. Are you can write here the distance time graph be a parallel, be a straight line, be a straight line parallel to time axis. Time axis. Time is known as axis, means along x-axis. Okay. Now we see another condition. Second condition. The second condition is when the object is in uniform motion along the straight line. When object is in uniform motion along a straight line. Along a straight line. Clear? Okay. With that, uniform motion means when an object is traveling equal distances in same interval of time, the time interval may be however small. Clear? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. क्लियर? देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. नाउ वी सी दैट एंड ड्रा द ग्राफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक two axes, x and y, and again we choose, this is origin, again we choose a scale. Scale is means one unit length on x axis, on x axis equal to 1 second, and 1 unit length at y axis equal to 5 minutes. हम इसके क्या किया है कि 1 यूनिट लेंथ जो होगी x एक्सिस पे 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी, और y एक्सिस पे जो 1 यूनिट लेंथ होगी वो 5 मीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी. Okay, now here time in second है here, and distance s, इसमें है मीटर. ओके, here टाइम यहां पर किसमें है, सेकेंड. हमने टाइम को किसमें मेजर किया, सेकंड में, और डिस्टेंस को किसमें मेजर कर रहे हैं, मीटर. क्लियर? द कंडीशन इज दैट द ऑब्जेक्ट इज
uniform motion. Here may be two conditions. That the object starts with zero, means stationary position. The object may starts with stationary position, or we can observe it with some speed. So first, we see that the object is present here. Means when t equal to 0, s equal to 0. Condition is that here t equal to 0, s equal to 0. Means जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां थी? 0 थी, मतलब इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया हुआ था जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. नाउ वी सी दैट हियर 1 2 3 4 5 6 and 7. Clear? Here 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, 25 meter and so on. Because the motion is uniform, means it will cover the equal distance in same interval of time. Hence, in first second it covers 5 meter. The position will be 1 5 something here. This represent 1 and 5. Okay. Now, in next 1 second it will cover next 5 meters. Means the position will be 5 to 10. This will be here. In next 1 second, the position will be at 50. Next 1 second, the position will be at 20. In next second, it will be at 25. Means 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20 and so on. When we join all these points, we get a straight line. This is distance time graph. Okay. For the object in uniform movement along a straight line. तो अगर हम क्या करें, इस कंडीशन में ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या यूनिफॉर्म मोशन से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन होगी. हमने कंडीशन क्या लिया है कि जब क्या t इक्वल 0 है एंड s इक्वल 0 है. द अनदर कंडीशन में भी when time axis in second and distance s in meter. Okay, y axis. चलिए अब हम कंफ्यूज क्या लेते हैं कि when t equal to 0 but s not equal to 0 means it will be somewhere here. Yes. After that we also have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on here. Suppose that this is 20. This question is 20. Now 25, 30, 35, 40 and so on. When you represent that, this will also be a straight line like this. Distance time graph. Okay, this is like something here. This is also straight line, this is also straight line, but the difference is that it starts at origin but it starts after some distance. Okay, now we find the determination of speed of an object.
determination of speed, determination of speed of an object, of an object. Okay. Clear? Now we discussed how we calculate the speed of an object by the distance time graph. Okay. We take 2 points here, A and B. Here T1 and here T2. Okay. We draw perpendicular. Here we take it C. We see that AC equal to AC, this length is T2 minus T1, and BC equal to, this is S1 and this is S2. So BC equal to S2 minus S1. Clear? AC time interval T2 minus T1, and BC, this is at y-axis, means distance, which is S2 minus S1. Okay. Now we know that speed equal to distance traveled upon time taken. Speed equal to distance upon time. Clear? Distance upon time. Here time is T1 to T2, means T2 by T1, and distance, this is S1 and this is S2, means travel distance S2 minus S1. So speed equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1, and from the graph AC, BC upon AC. Clear? This is the BC upon AC. The term BC upon AC, the term BC upon AC is known as slope of the distance time graph. The term BC upon AC is known as slope of distance time graph. Distance time graph. Okay. From this lesson, it clears that if the slope of distance time graph, if the slope of distance time graph is larger, then the speed will also be larger. Clear? In this way, we calculate the speed of an object by the distance time graph. If we calculate the slope of distance time graph with the time axis, then we get the speed of the object. In next video, we will discuss the distance time graph when the object is moving in a non-uniform motion. Thank you.